So hello class 12th. Today we are going to start with another topic of application of derivatives, that is tangents and normals, and this is very easy and interesting topic. Now what is it? Not a bit difficult. Now see, everybody of you knows, since you have done tangents in your 10th class also. Tangent is what? A line which touches the circle at one point. So here's we are discussing tangent. So tangent is a line touching, there we are saying circle, here we are saying touching the curve. Circle is also a type of curve. So is a line touching the curve at one point. Say that one point here is x0 y0. Suppose this is a curve and this we are making a tangent here. So this point, suppose where it is touching the tangent curve, it's say point x0 y0. Now comes to another word, normal. Now what is normal? Normal usually we use for perpendicular. So here also we are using normal for perpendicular. Normal is what? A line perpendicular to the tangent at that point. जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना उसी पॉइंट पे बेटा अगर हम एक नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें टेंजेंट के ऊपर उसी पॉइंट पे, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. सो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. Now, actually, what this chapter is having questions on tangents and normals. Usually, the questions are on making equations of tangents and normals, or finding out slopes of tangents and normals. So, what are actually, you have seen what are actually tangent and normal? They are lines. So, while making their equations, we should have in mind the equation of lines with us. So let's revise these little bit about your straight lines from your class 11. So what is this? This is point slope form. If you remember, y minus y1 is equal to m into x minus x1, where y1 and x1 are what? Points through which a line is passing, and m is what? The slope of that line. And slope was what? अगर आप कोई line, this is your suppose Cartesian plane, and suppose a line is passing like this. So this line is making some angle with positive direction of x-axis and in anti-clockwise. I'm repeating, the angle made by this line with positive direction of x-axis anti-clockwise, that angle is called theta. And if we find out tan of that theta, that is actually the slope of that line. So m is the slope of line. Or plus 2 में if you remember what is slope, while doing your fifth chapter, I've explained you that actually अगर आप y is equal to something है, वो क्या किसी curve का किसी का equation है, तो आप उसका dy by dx find out करते बेटा, तो that is the slope of that curve. Now then comes to another. So this is your point slope form. Another is what? Suppose a line is passing through origin. तो origin से pass करी line, it means 0 0. और line की इक्वेशन क्या थी? y minus y0 into is equal to m into x minus x0. X you can say y1 x1 आता है यहाँ point through which a line is passing. Now this line is passing through 0 0. It means यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा? 0 0. So the equation of a line passing through region is in the form of y is equal to mx. Then comes to your, if two lines are perpendicular to each other, like slope, यहाँ पे tangent और normal क्या है आपके, are perpendicular to each other. तो if you remember in इसकी suppose m1 slope और इसकी बेटा m2 है, तो if you remember हमने +1 में करा हुआ है, the such lines which are perpendicular to each other, their slopes product is -1. So m1 into m2 is equal to -1. Let tangent की अगर m1 है और normal की m2 है, तो m1 into m2 is equal to -1. देन फ्रॉम हेयर अगर आपको एक पता है तो आप दूसरी फाइंड आउट करनी है, तो m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2 हो जाता है और m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1 होता है. दीज ऑल आर यूजफुल फॉर योर while doing exercise. Now then, if two lines are parallel to each other, so their slopes are always equal. Now this is again important. If a line is parallel to x-axis, then line is like this parallel to x-axis. तो बेटा उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे और इसके बीच में कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा. थीटा 0 है. 0 मीन्स tan 0 कितना होता है? tan 0 इज 0. सो m इज इक्वल टू 0. सो सच अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका m क्या है? 0. एंड इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लाइक अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, मतलब पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो उसका यहाँ पे एंगल इज 90. तो अगर ये 90 है तो tan स्लोप इज tan 90, डेट इज इन्फिनिटी. सो 1 इज इक्वल 1/0 होएगा. नो दीज टू थिंग्स आर इवन रिटन इन योर बुक ऑल्सो, सो बी केयरफुल वाइल दिस. ही सेड इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, सपोज कोई टेंजेंट लाइन ऐसी है उसकी स्लोप 0 है, इट मीन्स दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो 0 देन tan थीटा इज इक्वल टू 0.
So theta is equal to 0. So he said, which means the tangent line is parallel to x-axis. So in this case, the equation of the tangent, अब equation of the tangent तो हमने कहाँ से उठाई है, यहीं से उठा रहे हैं. This is your equation of tangent का है. But वो बोल रहा है क्योंकि slope is what, 0. तो अगर स्लोप बेटा यहाँ जीरो फिल कर दो तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो. सो वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, यहाँ पे लिखा गया कि ऐसी इक्वेशन फिर ऐसी क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट. सिमिलरली अगर थीटा आपका पाई बाय 2 है, टैन थीटा इन्फिनिटी हो गया. लाइक यहाँ पे आप 1/0 फिल करोगे तो जीरो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको खत्म कर देगा. सो इट मीन्स यहाँ 1 है. सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, डेट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट. सो दिस इज द they have shown it here also. If theta is pi by 2, then tan theta is infinity, which means tangent line is perpendicular to x-axis, that is parallel to y-axis. In this case, equation of the tangent at x0 y0 is given by this. So I have explained you how this and this things are there. So now few examples I am discussing here. So very important, all the examples are important. If you once do these examples, then it's very easy to for you to do exercise. Now one thing more before doing the example, बेटा अब आप जब slope find out करोगे, स्लोप हम लोग यहाँ पे क्योंकि थीटा हमें नहीं दिया, लाइक मैं एक इक्वेशन से आपको एक एग्जांपल से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. दिस इज द कर्व. Y is equal to x cube minus x and at x is equal to 2. Now just before I have told you that curve का अगर आपको slope find out करना, अब यहाँ पे कोई थीटा आपको नहीं given, so what do you have to do, dy by dx you will find out. What do you get, 3x square minus 1. नो जो वो 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, उसने बोला क्या एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो बेटा आपका कभी भी स्लोप जो है वो किसी दिस इक्वेशन फॉर्म में, लाइक नॉन वेरिएबल फॉर्म में नहीं रहता. स्लोप इज ऑलवेज अ नंबर. सो व्हाट इज इट, x इज इक्वल टू 2. आप यहाँ पे फिल करोगे x की वैल्यू 2. 2 स्क्वायर इज व्हाट, 4. 4 3 12 minus 1 11. So your slope of tangent is 11. So here you will get questions like this in this exercise, like sometimes you have to find out the slope of tangent or slope of normal, and sometimes you have to find out their equations. Now let's move on to another example, important.